Welcome to the Health Department Skills faculty in BSDU. My name is Claudia Richard. I'm a tutor for teachers. I'm coming from Switzerland, and I'm here to implement a Swiss dual system, or the qualities of the Swiss dual system. What are the qualities of the Swiss dual system? There are mainly the connection between theoretical knowledge and how to use that knowledge now in your daily work routine. See the procedure, how is comfortable for the patient as well as for the staff. We can offer here a skills lab for our students where they actually can exercise procedures in nursing, nursing assisting in sponge bathing, assisting in mobilizing, assisting the nurses with preparing procedures, everything we can exercise in the skills lab. Our program is 3 months in BSDU, theory and skills lab, 3 months in the hospital working, coming back to BSDU 3 months and again to the hospital. During that time in the hospital, we will visit the students on a regular basis once a week with the aim to work with them in the hospital at the bedside and connecting again theoretical knowledge they gained here in BSDU and using that now in the hospital surrounding, checking why would we do it this way now, although the theory was saying this, seeing how to adapt in the older situation this theoretical knowledge. I think that's one of the features we can offer here in our program, which might distinguish very much from other programs known to you here in India. हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं एमएडी का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको हमारे प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे जो प्रोग्राम है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 1 ईयर का प्रोग्राम है। इसके दौरान हमें 3 महीने की थ्योरी पढ़ाई जाती है और 3 महीने के बाद हमें हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। हमारे यहाँ पढ़ाई के लिए उचित मटेरियल है, जैसे स्किल्स लैब है और इसके अलावा थ्योरी रूम है। थ्योरी रूम में हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है जो कि ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और हमारे जो सिस्टम है उसके बारे में सारी नॉलेज दी जाती है। और जो हम हॉस्पिटल में वर्क करते हैं उसके बारे में सारे मैनिकेन्स वगैरह हमारे स्किल्स लैब में रखे हुए हैं। वहाँ हमें प्रैक्टिस कराई जाती है कि हमें पेशेंट की किस तरीके से केयर करनी है, किस तरीके से पेशेंट को शिफ्ट करना है। हमें क्या है, स्किल्स की पढ़ाई ज़्यादा कराई जाती है। जो कि स्किल्स है उस स्किल्स के बारे में ज़्यादा सिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी के बारे में हमें ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताया जाता है। फिर हमें 3 महीने के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है प्रैक्टिस के लिए फॉर द पेशेंट्स केयर, पेशेंट शिफ्टिंग, ये सारी बातें हमें हॉस्पिटल में करने के लिए भेजी जाती है। जो हमने यहाँ सीखा है वो अप्लाई करेंगे हम हॉस्पिटल में। फिर आफ्टर 3 मंथ्स वापस हम BSDU में आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो उस दौरान हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है और स्किल्स लैब में ट्रेनिंग करवाई जाती है। फिर 3 महीने के बाद हमें वापस हॉस्पिटल भेजा जाता है ताकि हमने जो किया और जो सीखा वो हम अप्लाई कर सकें प्रैक्टिकल रूप से।